Hello everyone, in this video we will be discussing the nature of management. We would be discussing management as a science, but before that I would like to congratulate Ms. Shushma Kumari, Ms. Swati Agarwal and Ms. Shagufta Khan. Three of them answered the question that I asked in my previous video correctly. So congratulations guys. And in this video also I will be posting a question in between. So do answer it, just comment down your answer. Now let's move to management as a science. So there are certain characteristics of science which will help us determining whether management is a science or not. So the first characteristic of science is it is a systematized body of knowledge. Now what does that mean is science एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है. काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुई है, रिसर्च हुई है और जो रिसर्च या एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था आज वो है हमारे पास एज अ लॉ और एज अ थ्योरी. So in management also we do have many theories and a few principles and all of them are based on experiments. और जितने भी ये principles या theory हैं ये कोई एक रात में नहीं आ गए थे. They all have been the result of continuous experimentation and research work. So yes, management is a systematized body of knowledge. The second characteristic of science is principles based on experimentation. Now I have discussed this just now that the principles which we use right now, they are not developed in a single day. They were result of continuous experimentation. So in science also जितने भी ये theories हैं, whether it is your law of gravitation or Newton's law, बहुत सारे laws हैं और ये कोई एक दिन के अंदर नहीं आए थे. काफी ज्यादा experiments किए गए थे और research की गई थी, उसके बाद ये principles आए थे. Same with management, जितने भी principles we will be studying in management, ये कोई एक रात के अंदर नहीं आए थे. They are result of continuous experimentation and इनकी validity अभी भी लोग रिसर्च करते हैं इन पे कि आज भी ये कितना एप्लीकेबल या फिर वैलिड है या फिर नहीं है. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच डिटरमिन्स मैनेजमेंट एज अ साइंस इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. तो जैसे साइंस के जितने भी लॉज हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं वो सब यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं और यूनिवर्सली वैलिड है. ऐसे ही मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या फिर थ्योरीज हैं वो भी यूनिवर्सली वैलिड है. बस डिफरेंस इतना है कि जो मैनेजमेंट की थ्योरीज या फिर प्रिंसिपल्स हैं वो पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन थोड़ा सा डिफर कर सकती हैं, पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कभी चेंज नहीं होता. तो वी कैन नॉट से कि मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट साइंस, बट श्योरली वी कैन से दैट येस, मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस. So with this, we have finished the characteristics of science which determine management as a science. Now in the next video, we will be starting with management as an art. So just stay tuned and answer that question that I've asked you in this video. So thank you.